there's a breaking news that's coming in at this point. And this is about a stampede at a Satsang Pavilion in Hathras. It's a shocking development. We are getting information right now. Confirmed deaths at this point is around 27, but the DM of Hathras has said that the deaths are supposed to be likely to increase to at least at this point are likely to increase to 50 to 70. That's the information that we are getting at this point. A religious gathering. We are also getting the information that there seemed to have been a stampede after the cavalcade of a godman was passing, apparently a self-proclaimed godman. We'll try and get more on that, but let's listen into what the district magistrate is saying. This is the information that we are getting at this point. This is information from Hathras. We are trying to get our reporter on board. Breaking news that's coming in. Extremely worrying news. Around 50 to 60 people are likely to have died in the stampede that happened at Hathras. It was at a Satsang Pavilion where this stampede happened. According to officials, according to the information that we are getting, at least the district magistrate has gone on record to say that this seemed to have... let's just quickly listen into what my colleague is saying at this point. Towards the main road, and when this stampede-like situation happened in Hathras Nagar, in Hathras area, and second reason that is being told is that as soon as the preacher who was preaching in the ceremony, as he moved towards his vehicle, the people present in the ceremony in the makeshift tent, they rushed towards him to touch his feet to take his blessings, and this is when the stampede took place in Hathras, in which around 50 plus people are being reported dead. Around 70 people, 27 people have been brought to ETA, and the ETA official, district administration officials of ETA have confirmed that around 27 people have been brought to ETA, while DM Hathras is saying that around 50 to 60 people have been reported dead in Hathras only. They are being traced, and the number death toll, the DM is saying that the exact death toll cannot be ascertained at this time. But we are trying to do everything possible for the injured. Those who are injured, they are being given treatment. Two ministers from the state have been rushed to the spot. Lakshmi Narayan Singh, he has been rushed to the spot, and the second minister, Sandeep Singh, they are both rushing to the spot in Hathras to assist. Right. I think my colleague, we also... joined by my colleague Manish at this point. Manish, what is the information that you have at this point? What are the officials telling? What are you seeing on the ground? देखिए, अभी चूंकि राज्य सरकार ने 2 मंत्रियों को मौके पर भेजा है, जिसमें लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, मथुरा के रहने वाले हैं, उन्हें भेजा गया है। चूंकि मामला अलीगढ़ मंडल का है, तो अलीगढ़ के संदीप सिंह हैं। योगी सरकार में जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं, और साथ ही जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है। एडीजी आगरा और कमिश्नर आगरा दोनों मिलकर इस पूरे मामले की जांच करेंगे। तो पहला फोकस, एक तो जो घायल हैं उन्हें फौरन राहत मिले, उनका जो बेहतर चिकित्सीय परीक्षण है वो हो सके, लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा सके। डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि बेहतर उन्हें ट्रीटमेंट दें। पहला फोकस इस बात पर है, और दूसरा फोकस इस हादसे के पीछे कौन से जिम्मेदार कारण रहे, उनकी पड़ताल करना। तो उसकी कमेटी बना गई है। राज्य सरकार परिवार के साथ है, आर्थिक सहायता का ऐलान हुआ है। दोनों मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। मौके की पूरी हर पल का अपडेट मुख्य सचिव के स्तर पर लिया जा रहा है, और साथ ही मुख्यमंत्री भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। तो राज्य सरकार अपनी ओर से घटना के बाद पूरी कोशिश कर रही है कि घायलों का बेहतर इलाज और जांच के बाद वो जिम्मेदार जिनके चलते ये हादसा हुआ, जहां जिस स्तर पर लापरवाही बरती गई, क्या ट्रैफिक को रोका जा सकता था, क्या पुलिस की चूक रही, क्या अधिकारियों की अनदेखी रही, ये ऐसे अहम कारण हैं जो जांच में सामने आएंगे, उसके हिसाब से राज्य सरकार एक्शन भी लेगी। जी मनीष, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स जस्ट क्विकली लिसन इन टू व्हाट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज स्पोकन।
जी, हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है कि एक बड़ी घटना हाथरस में घट गई है और मौके पे हम लोग स्थिति का जायजा लेकर के और सरकार के द्वारा जो भी वहाँ पे उचित निर्णय लेने हैं उसको उचित निर्णय लिया जाए। और हम लोग क्योंकि घटना काफी लोग इसमें संख्या अभी तक बढ़ती चली जा रही है लगातार, हम सब लोग जाकर के देखने वाले हैं कि वहाँ पे क्या जो घटना का स्थिति है वहाँ पे स्थल पे जाकर के, और जैसा होगा अभी हम लोग अवगत कराएंगे। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। All right, that's the information that we are getting at this point. Now let's just try and understand what do we know. There are a couple of information that we know at this point, and that is one, this was a private event. That's what the officials have said. This was a private event by what officials have called a godman, a self-proclaimed godman. Bhole Baba is how he goes with. That's the information that we have. We are also being told by the district magistrate, and you heard that reaction as well, where the district magistrate said that this was because of the excess humidity in that particular area. But our reporters are also picking up that there was this cavalcade of the godmen, of the self-proclaimed godmen that was moving, and it was during this time that there seemed to have been a stampede that erupted. The visuals are on your screen of what this satsang was supposed to have been. Absolute chaos. Very worrying information coming in from Hathras at this point. What we are being told is officially, though the confirmation is around 27 deaths, the death toll is likely to go starkly up. The district magistrate as of now has given us a number of around, it's likely to go up to between 50 to 60, but it's also likely to go up further. The situation on the ground is not good. Ministers have been rushed to the location, but lots of questions on whether this was something that could have been avoided, whether there were lapses in terms of security arrangements. The administration has said that the security arrangements was the responsibility of those who had arranged this event privately. But remember the numbers involved. The satsang was expected to have a large number of numbers, and therefore could it only have been the responsibility of the private players? Let's listen in to what Prime Minister Modi has also spoken in the parliament. आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी।